गुड मॉर्निंग क्लास। 10th क्लास में आपने एक टॉपिक स्टडी किया था ओम्स लॉ एंड वी हैव स्टडीड ओम्स लॉ in our first section also, and you already know that some numericals based on simple circuits, they can be solved using Ohm's law. If you wish to find net resistance or potential drop across any resistance or current through any resistance, you can apply Ohm's law, that V is equal to IR. Okay, and if the resistances they are in series combination or in parallel combination, you can find equivalent resistance also. But if there are some circuits which are complex in nature, means the circuits who cannot be solved using Ohm's law, such circuits are used by Kirchhoff's laws. This is the next stage of Ohm's law. हालांकि आगे सर्किट एनालिसिस की भी एक ब्रांच है जहां हम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो सर्किट्स है उनको सिंप्लीफाई करते हैं थ्रू नेटवर्क थ्योरम्स, बट हियर this is the next or advanced stage of Ohm's law where we can simplify comparatively complex circuits using Kirchhoff's law. Okay, so Kirchhoff's laws, they are used to simplify the complex circuits which cannot be solved using Ohm's law. ये किस वे में कॉम्प्लेक्स होंगे? The circuit will be complex that there are more than one part, means resistance neither they are in series combination nor they are in parallel combination, or there are more than one source of EMF. Okay, so such circuits can be simplified using Kirchhoff's law. In Kirchhoff's law, basically there are two laws. One is related to current and other is related to potential drop or voltage drop. Okay, so first law, order is fixed. First law is Kirchhoff's current or junction law, and second law is Kirchhoff's voltage or loop rule. Okay, now यहाँ पर एक वर्ड न्यू जनरेट हुए हैं, one is junction and other is loop. Okay, so let us understand first current law. What is current law? According to this law, the algebraic sum of currents meeting at a junction in a closed circuit is always equal to 0. अब आपको ये पता है कि अगर ओवरऑल सर्किट क्लोज्ड होगा तभी सर्किट में करंट फ्लो होगी. अगर सर्किट ओपन है देन करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट. ओके, सो क्लोज्ड एक नेटवर्क लिया है और उस क्लोज्ड नेटवर्क में आपको एक जंक्शन चूज करना है. इस जंक्शन पर टोटल करंट्स 0 होंगे. सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. यहां जब आप सम ले रहे हैं then sum is algebraic. It means some sign convention is always applicable. Okay, now what is a junction? Junction is a point in circuit where two or more branches meet. सर्किट में डिफरेंट ब्रांचेस हैं और वो ब्रांचेस जब किसी भी एक पॉइंट पर जॉइंट होती हैं, दैट जॉइंट ऑफ वायर इज नोन एज जंक्शन. ओके, सो 10th क्लास में आपने स्टडी किया था जॉइंट ऑफ वायर. ओके, इफ देयर इज नो जॉइंट देन इट इज नॉट ए ब्रांच, इट इज नॉट ए जंक्शन, इट इज जस्ट ए ब्रांच. साइन कन्वेंशन क्या है? ऑल द करंट्स मूविंग टुवर्ड्स जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव. आप सबसे पहले एक जंक्शन चूज करें और देखें उस जंक्शन पर कौन कौन सी ब्रांचेस मिलती हैं. उन जंक्शन में करंट्स को देखें. If the currents are towards junction, then they will be treated as positive. Now, all the currents moving away from the junction, they are taken as negative. Okay, these are simple sign conventions. Now, see one example. Suppose this is a junction and these are currents from different branches. हमने 5 branches ली हैं. Now you can see I1 is away from the junction. ये junction है, it is away from the junction. I2 is towards junction, I3 is away from junction, I4 is away from the junction, and I5 is towards junction. So I2 and I5 are positive, I1, I3 and I4 will be negative.
just write them with their sign and put it equal to 0. आप सभी नेगेटिव वैल्यू को ट्रांसपोज करते हैं ऑन राइट हैंड साइड. सो I2 plus I5 is equal to I1 plus I3 plus I4. What is I2 plus I5? I2 and I5, they are incoming currents, and I1, I3 and I4, they are outgoing currents. It means the total currents towards junction is always equal to total currents flowing away from the junction. जितनी करंट टुवर्ड्स जंक्शन होगी उतनी ही करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन होगी. So total current towards junction is equal to total current away from the junction. Actually this law is based on law of conservation of charge. चार्ज का कंजर्वेशन होता है. चार्ज जिस रेट से सर्किट में फ्लो करता है टुवर्ड्स जंक्शन, उसी रेट से वो अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव करेगा. एंड यू नो दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और ये किस कॉन्सेप्ट पर है? चार्ज कैन नॉट अकुमुलेट एट जंक्शन. चार्ज कभी भी किसी जंक्शन पर किसी भी पॉइंट पर इकट्ठा नहीं होता, अकुमुलेट नहीं होता. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टुवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज away from the junction. Here there is no such restriction about number of branches, कितनी branches से करंट आ रही है या कितनी branches से करंट जा रही है. It doesn't matter, but the rate of flow of charges towards junction through all the branches is equal to rate of flow of charges away from the junction through remaining all the branches. ओके सभी करंट्स इनकमिंग नहीं हो सकती और सभी करंट्स आउटगोइंग नहीं हो सकती. इफ देयर इज एनी जंक्शन, सम करंट्स विल बी टुवर्ड्स द जंक्शन एंड सम करंट्स विल बी अवे फ्रॉम द जंक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज voltage rule. Now again this law is applicable in a closed loop only. लूप एक सर्किट का पार्ट है, हमेशा ध्यान रखें. लूप एक सर्किट का पार्ट है. एक क्लोज लूप मींस एक पाथ जो कंप्लीटली क्लोज्ड है. ये लूप आप चूज करेंगे. ओके, सर्किट का एक पार्ट हो सकता है और इंटायर सर्किट भी हो सकता है. नाउ इन ए क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क द algebraic sum of potential differences must be 0. पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी कॉज से हो सकता है, जैसे सोर्स ऑफ ईएमएफ भी हो सकते हैं. दीज आर द सोर्स ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप. और रेजिस्टिव एलिमेंट भी हो सकते हैं जिनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अपीयर होता है. ओके, बट इन ए क्लोज लूप सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ओके, सो इफ आई कंसिडर ए लूप contains source of EMFs and resistances, then algebraic sum of the EMFs is always equal to algebraic sum of potential drop across resistances in that loop. तो अगर आपको एक क्लोज लूप गिवन है तो जितने भी EMFs हैं, मीट सोर्स ऑफ EMFs हैं, इन सभी का algebraic sum it must be equal to algebraic sum of potential drop across resistance. एक लूप लिया है, so it contains some source of EMFs, it contains some resistive elements, then algebraic sum of all EMFs is equal to algebraic sum of all potential drops across resistances. Okay, so we will apply law in this way. EMF is equal to IR. Actually this law is based on law of conservation of energy. This is the source of energy and this is the energy developed across resistances. Okay, energy can neither be created nor be destroyed, so energy provided by the source is equal to energy produced across resistive elements. Okay, now again there are sign conventions for this law. First of all you have to choose a closed loop of a network. आपको उस नेटवर्क के अंदर first of all you have to choose a closed loop and move in any direction, either in clockwise direction or in anti-clockwise direction. You know that if there is a closed path
you can move either in clockwise direction along the path or you can move in anti-clockwise direction. So this is the first step to apply Kirchhoff's second law, that first you will choose a loop and then you will decide the direction of motion, whether you will proceed in clockwise direction or in anti-clockwise direction. So it is the first step, first important step, the selection of loop and selection of direction. Okay, next thing, in left hand side we have to find out algebraic sum of the EMFs. अब algebraic sum है, it means some sign convention is applicable. So how will you determine the direction? Now, while moving along the closed path, आपने जो पाथ की डायरेक्शन ली है उसके अलोंग मूव करें. If positive terminal of cell encountered first, then that EMF is taken as negative. आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, then see which terminal encountered first. आपको सेल का कौन सा टर्मिनल पहले एनकाउंटर होगा. अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल है, देन आप उस सेल के ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे, और अगर नेगेटिव टर्मिनल है तब आप उस सेल को पॉजिटिव लेंगे. दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर ईएमएफ्स फॉर लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या है? फॉर राइट हैंड साइड मीन्स algebraic sum of the potential drops. algebraic sum of the potential drops. इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या है? While moving along a loop, direction of current through resistance is same as direction of loop, then that potential drop is taken as positive. आप लूप के along मूव कर रहे हैं, आपको एक रेजिस्टेंस मिलता है, then see what is the direction of current. If the direction of current and direction of loop, if it is same, then potential drop across that resistance will be positive. If direction of loop and direction of current through a resistance, they are opposite, then potential drop across that resistance will be negative. Okay, so these are some simple sign convention. आपको ये sign conventions याद रखनी है. You have to apply it in a closed loop. Second important thing, between two junctions or current in a branch through all components remains same. अगर आपने दो जंक्शन लिए हैं तो दो जंक्शन के बीच में कितने भी रेजिस्टेंस आए, कितने भी एलिमेंट्स आए, सभी के थ्रू करंट की वैल्यू सेम होती है. ओके, सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी and we will understand it by an example. See this example. You can see this is a circuit. पहले आप ऑब्जर्व कर लें सर्किट को ध्यान से. This is one battery, this is positive terminal and minus terminal. This is positive terminal, this is negative terminal. Resistance, resistance. B, E, हमने बाकी नेम लिखे हैं A, C, D, E and F. Now let us, अगर डायरेक्शंस करंट की गिवन है then it is no problem. You can see ये पॉजिटिव टर्मिनल है, then direction of current is always in this direction from positive to negative. इसके कारण भी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव है. सबसे पहले देखें जंक्शन कौन से हैं. A, C, D and F, they are not junction. Okay, junctions are B and E, क्योंकि B पर ये ब्रांच और ये ब्रांच ये मिलते हैं. ओके, सिमिलरली E is a junction. Here B and E are junction. अगर ये जंक्शन है तो फिर ब्रांचेस कौन सी हैं? B, A, F, E ये ब्रांच है. B, E is a branch. B, C, D, E is a branch, क्योंकि ये एक सिंपल पाथ है. ओके, सो देयर आर 3 ब्रांचेस. ये एग्जाम में आपको लिखनी नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई फर्स्ट लॉ एट B. B पर देखें
I1 is incoming current, I2 is incoming current, and I3 is outgoing current. So total incoming current is equal to total outgoing current. So I1 plus I2 is equal to I3. This is first equation. Okay. So similarly, you can apply same law at this junction also. I3 is incoming current, I2 and I1 they are outgoing currents. Direction is known. So I3 is equal to again I1 plus I2. You will get same result. Now क्लोज लूप, कौन से क्लोज लूप है? ए, बी, ई, एफ एंड ए. सी, ए, बी, ई, एफ एंड ए. दिस इज ए क्लोज लूप. तो यहां डायरेक्शन भी फिक्स है, ए टू बी टू ई टू एफ एंड एफ टू ए. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप. आप रिवर्स भी ले सकते हैं, ओके, बट द रिजल्ट विल रिमेन अनअफेक्टेड. बी, सी, डी, ई, बी. दिस इज सेकेंड लूप. तो ए, बी, ई, एफ, ए and B, C, D, E, B. These are two loops. Now I am taking first loop. I will move from A to B, B to E, E to F and F to A. Now A to B move करें, there is no resistive element, no EMF. B to E move करें, B to E, first plate, it is plus. Okay. So this 2 volt will be negative. Then move along the path. First plate of cell, negative plate. So it will be positive. What I have written here. While moving in this direction, 2 volt will be negative and 1 volt, 1.5 volt will be positive. Now you can think why. What is algebraic sum of the EMF? It is minus 2 and plus 1.5. This is left hand side of law. Okay. अब आपको कैलकुलेट करना है algebraic sum of the IR. Move from A to B, no resistance. B to E, this is the resistance. What is direction of I2? It is from E to B. We are moving from B to E. So this potential drop will be negative, because directions are opposite. 2I2 is negative. Then E to F, no resistance. F to A, direction is same as direction of loop. So potential drop across 1 ohm will be positive. See, while moving along the loop, I2 is opposite and I1 is along the loop. So potential drop due to I2 will be negative and potential drop due to I1 will be positive. So minus 2I2 and plus 1 I1. This is algebraic sum of the potential drops, right hand side. Okay. Apply second law. Algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of potential drops. So minus 2 plus 1.5 is minus 0.5. Minus 2I2 plus I1 is this one. This is second equation. Apply. अब आप ये खुद चेक करें. Why I have written in this way. Apply same in loop B, C, D, E, B. 5I3 plus 2I2 is equal to 2. ये आप खुद find करें. I3, its value is I1 plus I2. Put this equation here. 5I1 plus I2 plus 2I2 is equal to 2. 5I1 plus 5I2 plus 2I2, 7I2 is equal to 2. Now, there are two equations. This is equation number 2. I1 minus 2I2 is equal to minus 0.5 and 5I1 plus 7I2 is equal to 2. आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व की हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व की हैं. So using equation number 2 and equation number 3, you can find out value of I1 and I2 and you have to solve yourself. Okay. So this is the law, Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law, and these are simple methods.
एग्जाम्स में आपको ये डायरेक्टली डिटेल नहीं लिखनी है. डायरेक्टली यू हैव टू फॉर्म इक्वेशन इन दिस वे. Okay, so whatever I have told you is just the explanation of the law. Later on I will give you some exercise so that you may apply Kirchhoff's first law and second law in that loop, or you, if you have any doubt, you may text me. Have a good day.